do it. It is not a standalone therapy. It's a part of Tibbinavi. We have to understand that. Every person has a unique body type, and how they respond to food, climate, hijama, and emotions depends on the body type you have. You know. तो इसी अच्छा, आप कभी कभी ऐसा था मेरा गर्म मिजाज है लेकिन फिर मुझे सर्दी क्यों हो जा रही? How many of you must be confused कि मेरा मिजाज गर्म है लेकिन मेरा सीना क्यों भर जा रहा? Proper rest is also a form of healing. अगर आप जो है यहाँ पे हिजामा कर रहे हैं, but the person is not having proper rest, the person is not having proper diet, the person is not having the diet according to his temperament, then also hijama will not be effective. Will it be effective? बहुत ट्रेंड देख रहे, कॉफी में घी डाल के पीना. अब एक कोई रहते कॉफी में लेमन डाल के पीना. तो डू यू थिंक इस कॉफी में लेमन डाल के पीना सही है या कॉफी में घी डाल के पीना सही है? डिफरेंट फूड्स के साथ साथ डिफरेंट सीजन्स भी. तो यू हैव टू एडजस्ट योर हिजामा थेरेपी सेशंस एंड डाइटरी जो है रिकमेंडेशंस अकॉर्डिंग टू वेदर. इफ समबडी के स्पिरिचुअल स्टेट को कंसिडर ही नहीं करते वो लोग, मेटाफिजिकल इश्यूज को कंसिडर ही नहीं करते वो लोग. तो जिंजर हॉट एंड ड्राई, एंड उसमें भी ड्राई जिंजर का टेम्परमेंट अलग रहता है, वेट जिंजर का टेम्परमेंट अलग है. सर्दी खत्म नहीं हो रही, निमोनिया हो गया, राइस स्टॉप कर दो मम्मा, ने तो ब्राउन राइस स्टार्ट करो. इमीडिएटली ब्राउन राइस स्टार्ट करते ऐसे खत्म हो जाता, व्हाइट राइस बंद कर दिए. कितने सेशंस करना है, कितने बार बुलाना है, कितना उसका ट्रीटमेंट प्लान की फ्रीक्वेंसी रहेगी, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द बॉडी टाइप. ठीक है.